for today's discussion. Please. Previously, the age of viability of fetus was considered as 28 weeks, and so the traditional definition of abortions was also different. It was expulsion of the product of conception before the age of viability, that was 28 weeks, and or less than 1,000 grams in weight. If the fetus is less than 1,000 grams in weight, or it is less than 28 weeks, that is called as abortion. But recently, due to advanced perinatal care and resources, the definition has changed, and now it is the expulsion of products of conception before the age of viability, which has changed to 22 weeks, or less than, or the fetal weight less than 500 grams in weight. The term miscarriage is synonymous to abortion, but it is mainly used for early pregnancy loss. The overall incidence is 10 to 20%. Abortions occur in 10 to 20% of all clinical pregnancies. 75% of abortions occur before the age of 16th week. These rates may vary according to maternal age and also high in women with past miscarriages. This is the general classification of abortions. The main classification, it is divided into two subclasses, spontaneous and induced. Spontaneous and induced. The spontaneous is further divided into isolated and recurrent. Isolated, they are further divided into threatened, inevitable, complete, incomplete, missed, and septic abortions. Induced, we have the legal and illegal abortions. I'm keeping the medical termination pregnancy. Medical termination, right? Spontaneous abortions. These are, please bata dein wo kaun sa point hai. As I earlier described, there are 6 subclasses: threatened, complete, inevitable, incomplete, missed, and septic. I will share the details further, but in general, this is the main thing. We can come back to the table once we're done with the details. The main etiology, we have two causes, the fetal and maternal. Among the fetal causes, we have genetic. 50% of early miscarriages they are mainly due to the chromosomal anomalies, trisomies, polyploidy, monosomies, translocations, deletions, and inversions. Or it can also occur in multiple pregnancies and the degeneration of villi. Maternal causes, they are endocrine and metabolic factors, like we have diabetes, thyroid dysfunctions. The anatomical abnormalities include the cervico-uterine factors, which includes the cervical incompetence or insufficiency, congenital malformations of the uterus, uterine fibroids, or intrauterine adhesions. Other than this, there are infections. Viral infections include rubella, cytomegalovirus virus, HIV. Parasitic include toxoplasma, malaria. Bacteria includes uroplasma and chlamydia. The environmental factors also include cigarette smoking, alcohol consumption, or contraceptive agents used by the mother. Maternal medical illness like cyanotic heart disease, hemoglobinopathies, they also aid in abortions. And their causes are unexplained. The first is threatened abortion and spontaneous. The threatened abortion is a condition in which miscarriage has started but has not progressed to a stage from which recovery is impossible. It is still reversible. The main presenting features are PV spotting. The patient presents with PV spotting, backache, and lower abdominal pain, and but the cervical os is closed, and fetal cardiac activity is still present. Yes, there is a history of amenorrhea, which shows that the patient might be pregnant, and they present with PV bleeding, lower abdominal pain, backache. The uterus size also corresponds to the gestational age. Fetal cardiac activity is present and external os is closed. Ultrasound is diagnostic in this case, and pelvic examination should be avoided. The differential diagnosis is cervical ectopy, polyps, carcinoma, ectopic pregnancy, or hydatiform. Cervical ectopy, polyps. Sir, spotting, sir. ये निकाल दो ये
So spotting PV spotting के साथ और थोड़ी अगर सी इसमें uterine size cervical ectocy, polyps और कार्सिनोमा में एमेनोरिया तो नहीं ना होगा। लेकिन PV spotting से पीवी स्पॉटिंग तो अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की जितनी कॉजेज है वो सारी आ जाएंगी, ठीक वो नहीं होता। ओके सर वो आपने ये किया कि एमेनोरिया है, पेशेंट की एज रिप्रोडक्टिव ईयर्स की एज है, उसको एमेनोरिया है और उसके बाद उसको ब्लीडिंग है, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, सेकंड पोर्शन में डिस्कम्फर्ट is a better word than to say pain, not necessarily in the back, उस तरह से नहीं, but lower abdominal discomfort maybe, because and amenorrhea, or generally if the patient has had a home pregnancy test done or she has had previously had an ultrasound, so there may be evidence of pregnancy as it is. Yes. So only then you will call it gestational amenorrhea. But anyway, there is amenorrhea with early features. When you ask the patient, they may have been nausea, vomiting, and Breast early and features breast. of pregnancy. And then the pregnancy test may be positive, or she may have had an ultrasound which had shown an intact pregnancy, and then there is bleeding. okay So, और वो फिर आप उसको polyps carcinoma ये इनको इसलिए मैं कह रहा हूँ, it is important that when you talk about differential diagnosis, you should talk about the relevant polyps and carcinoma. अब इसमें fibroid भी डाल दो, हाँ, इसमें polycystic ovaries भी डाल दो, वो क्या है? And cervical ectopy doesn't cause bleeding. Cervical ectopy is a totally different condition. How many of you know cervical ectopy? खड़े तो आप define कर सकते हो? What is cervical ectopy? So cervical ectopy doesn't cause bleeding, doesn't cause amenorrhea, doesn't cause pregnancy symptoms. yes I did ectopic pregnancy, I did it for moles. So therefore, किताब में भी लिखा हुआ, किताब भी मेरे जिसमें नहीं लिखी होगी, तो वो उस इसलिए या आप जैसे सुने, तो मतलब है वो उसमें वो गलती कर सकते. So it doesn't stand. ठीक है सर ये मैंने कहा मैं लेकिन emphasize में सिर्फ एक Ectopic differential diagnosis of threatened abortion पे नहीं करता. It's a matter of, you learn that it is a matter of principle when you talk about that you don't have a long list of conditions from which you have to differentially diagnose the one that you think is the diagnosis. Remember that. If you have a long list that does not show that you have a lot of knowledge, you may have bookish knowledge, a lot of that, but that shows that the application of that knowledge is poor. So it has to be, remember a couple of weeks ago, Professor Rashid did say that you do not have a long, three, maximum 4 conditions. yes So because you have to include the features. Now, if a woman has amenorrhea and pregnancy test was positive and she has no bleeding, what would differentiate a threatened abortion from ectopic pregnancy? There would be features. intrauterine नहीं होगी on ultrasound if we get अल्ट्रासाउंड पे ना जाओ, अभी वही तुम्हारी ओरिएंटेशन वो गड़बड़ हो जाती है. थ्रेटेंड अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या फर्क है? हिस्ट्री में देयर इज एमेनोरिया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और पेशेंट हैज सिम्पटम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, नाउजिया, वोमिटिंग, pain, there will be pain. In threatened abortion, it will be discomfort. Now, looking at the site of pain in threatened abortion, it will be usually in the midline, mid-lower abdomen. In case of ectopic pregnancy, it usually will be on site. localized on Then, उसके बाद next. चलो पल्स भी हो सकता है, अभी वो स्टेबल कंडीशन है, बराबर बराबर हो, फिर गुड, ठीक है. वो एब्डोमेन पे क्यों हाथ लगाओगे? टेंडरनेस, रिटन पोर्शन में टेंडरनेस नहीं होगी और इसमें रिबाउंड टेंडरनेस भी हो सकती है ectopic pregnancy में. So there will be sharp piercing pain and usually in ectopic pregnancy. उसके बाद फिर आता है कि लेप्रोस्कोपी आप करोगे, वो अल्ट्रासाउंड करोगे और साथ में आप बीटा एचसीजी और वो उसको देखने के लिए, राइट. सो यू गो विद द क्लिनिकल फीचर्स व्हिच इज द सम ऑफ presenting symptoms and what you elicit on physical examination. So clinical features should in many cases strongly
give direction towards suspicion of either a threatened or ectopic. Chलिए. And how we will manage this patient? We should consider bed rest in such patients. Bed rest को until- काट दो. Bed rest, ये तुम आजकल के जमाने में कर रहे हो. ठीक है. मैं तुम लोगों को कितना बताया है, पहले भी बताया होगा कि मैंने 76 में ट्रेनिंग शुरू की. उस वक्त की 75 का एडिशन था गायनी की किताब में. उसमें थ्रेटेड अबॉर्शन की मैनेजमेंट थी. ओल्ड मैनेजमेंट, बेड रेस्ट. Modern management, you don't have to put the patient to the bed. सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दो, तुम ये ना करो, तुम वो ना कर दो. It's got nothing to do with that. I'm not saying that you let her play tennis or let her go for a horse ride. Not that. The only thing that you have to stop or you have to उसमें precaution है, that is क्या precautions? Long standing वो century. So constipation avoid करनी. हाँ? Avoid constipation. Constipation avoid करनी. क्या किस किस्म की Avoid हकीम poison. हाँ? So लेकिन अभी भी हम कहते नहीं, क्यों कहते हो? गलत practice- कहते हो ना. यही तो मैं मौका है तुम लोगों को बताने का. कहते हो, अगर कहते हो तो इसका मतलब सही है. बेड रेस्ट भी तुमने लिखा हो. Sir, avoid poison. जी. Avoid Yes. poison. Yes, avoid coitus. That is the only precaution that you tell the patient. Or reassure her that, of course, take things lightly. Don't jump around. Obviously, nobody would. But ये जो age old दाइयों वाले concept है, they have to be, shunned out. कमाल करते हो इधर मेरे साथ तुम काम कर रहे हो और तुम कहते हो कि हम पेशेंट को ये कहते हैं. खबरदार आइंदा से कहा है इस तरह से. कि हम कह देते हैं तो is that a justification for you to do it कि इस तरह से करोगे? पेन रिलीफ क्या दोगे? Just pass on लेते हैं गलत करते हो. फिर वही वाली बात है. पेन तो है ही नहीं, उसको तो डिस्कम्फर्ट है. So लेकिन एंटीस्पाज्मोटिक भी नहीं देंगे. क्यों एंटीस्पाज्मोटिक? कौन सा स्पाज्म हो रहा है उस एंटीस्पाज्मोटिक? वो वही गलत बात है. कौन सा स्पाज्म हो रहा है? That usually is more. तुमने कितने एंटीनेटल किए हैं अर्ली प्रेगनेंसी में? जब तुम एंटीनेटल करते हो अर्ली प्रेगनेंसी में, most of the patients, most of the pregnant women, rather most of the pregnant people, of name terminology, most of the pregnant people would say that they have a lower abdominal cramping or discomfort. That is a common symptom. And this is something which happens even in premenstrual phase. So same kind of symptoms are there in early pregnancy. And that is there. So pain relief, if she needs pain relief, that means there is something wrong. Then it is not threatened abortion. So pain relief, keh dena jo hai, that is an admission of the fact that you think that it is painful thing. So threatened abortion is so common and is so commonly mismanaged. Mismanaged, wrongly managed, I would say. It doesn't stand to reason. Actually, आगे चले. Progesterone sports. Essentially, आजकल मैं खुद देखता हूँ progesterone sport. उसकी रैशनल ये ऐसा होता है कि अगर वो हो कि जी ये अगर उसको प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी, कोई ऑडियंस में से कोई बोलेगा कि प्रोजेस्टेरोन देने का क्या है रैशनल? उसको ब्लीडिंग हो रही है तो तुम उसको एस्प्रिन दे रहे हो. वो तो एस्प्रिन अगर उसको मिल रही है तो बंद करोगे बच्चा. तो लो मॉलिक्यूलर वेट हैपन दे रहे हो, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस कहां से हो, ब्लीडिंग हो रही है. Threatened abortion की मैनेजमेंट कर रहे हो. You are not managing recurrent abortion. तो इसको निकालो. Cervical sarclage threatened है तो उस दौरान में even if the cervix is open, Sir, threatened में तो closed है ना? Threatened में closed. तो threatened में लगाओगे तुम sarclage. Sir, closed की. फिर क्यों लगा रहे हो sarclage? अगर उसकी full cervical length है, फिर तो there is no role of cervical sarclage. वही ना, वो you may be precipitating what you are trying to avoid. So if there is bleeding, don't apply sarclage. जब अगर किसी को लगाना भी है, if there is previous history suggestive of cervical incompetence for which you have planned or you planned
सर्वाइकल सर्कलाज एक पेशेंट है, मैंने उनको कहा कि जी आप सुबह आ जाए, मैंने आपका सर्कलाज लगाना है, ठीक जा रही है, 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी, वो आती है सुबह को और थिएटर में जिस वो प्री ऑपरेटिव है एंड देयर इज ब्लीडिंग, would I proceed with cerclage or not? I will not. Until the bleeding settles. Bleeding अच्छी तरह से settle हो जाए and you confirm that the pregnancy is doing all right. So therefore, cervical cerclage is not management of threatened abortion. ठीक है, ये आगे नहीं जा रहा। Progesterone support के बारे में बताओ। सर तो अगर हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री हो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रेटेड मिसकैरेज हो और उसके साथ अब जो है वो स्पॉटिंग भी हो रही हो तो फिर हम वजाइनल प्रोजेस्टेरोन देते हैं 16 वीक्स ये तक। आप हाँ आपने क्या बोला दोबारा से कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री अबॉर्शन किया है तो फिर आप प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं, राइट? मेरा जी ख्याल है सर। कि there can be made a case of giving progesterone support anyway. The reasons are that if you look at if you try to kind of assess and you say that you'll carry out hormone assays, and if the progesterone is low, then you will supplement by progesterone. But what happens is, if you find that progesterone levels are low for pregnancy, then pregnancy is already doomed and your progesterone support or supplementation is not going to salvage that pregnancy. Number one. Number two, now, generally in cases of, previous history of preterm labor, we give progesterone in one or the other, either other form, either orally or vaginally, rectally, or intramuscular injection. Intramuscular injection has been withdrawn and that is not on now. So vaginal, rectal, oral, those progesterone supplementation is still practiced. It still is considered to be helpful in preterm labor patients or patients with history of preterm labor, or also in patients who present with or in whom a short cervix is diagnosed, say at 20 or late second trimester. So progesterone has that value in those cases. In such cases of threatened abortion in early pregnancy, my rationale for giving progesterone would be that progesterone, administering progesterone has no negative effect. It doesn't have any teratogenic effects. And just in case, if that threatening is because of a progesterone deficiency, it will compensate for that. And secondly, it will also is a pharmacological agent, which will give some reassurance to the patient as well. You explained that one of the reasons that we gave it, the progesterone makes the pregnancies hold more secure. So that is the rationale of giving progesterone. Because by that time, the placenta has not completely overtaken an early pregnancy to produce the amount of progesterone which is required to sustain the pregnancy. And therefore, I would, on the first evidence of or the first sign of threatened abortion, I'll start her with progesterone. That is my rationale. I wouldn't go for hormone levels or blood assays for progesterone levels. So, number one treatment would be in case of threatened abortion, after you have completed the workup of the patient and you ensure that it is threatened abortion. So first thing is, let's reassure the patient and put her fears to rest. Number one, allay her anxiety. Tell her that it is only threatened, and most of the patients, they come out of it. As a matter of fact, if you look at the incidence of bleeding in pregnancy, in early pregnancy particularly, in 40% of the patients, there may be 1 or 2 episodes of bleeding. So, but most of them, they carry on normally, and the pregnancy is usually carried to term. So that is quite reassuring information for the patient. So explain to that and tell her that your pregnancy is intact. And what you need to do is that you can carry on with light housework. You can be up and about. You don't have to be bedridden. Specifically, you mentioned you don't have to be bedridden.
You can climb stairs or up and there's no problem with that. Because the mechanism of that threatening is totally different. It is not related with the physical activity. Yes, but that mechanism is happening within the reproductive tract. And that is something which may be affected by coitus. And that is the only recommendation that you will give not to indulge in. And the rest is okay. And if she has progesterone, you give progesterone, continue with your folic acid. And that's about it. But don't give aspirin or don't give low molecular weight heparin. Yeah. Those are not for threatened abortion. The threatened abortion, simple reassurance, explanation, progestogen, and observation. Okay. Then we come to inevitable abortion. It is where the The सर तो आपने प्रोजेस्टेरोन की बताई ना कि थ्रेटन में हमने इसलिए देना है कि पेशेंट को रीअश्योर कर दे नेगेटिव इफेक्ट कोई नहीं है और अगर इन हिडन डेफिशिएंसी है तो वो कवर हो जाएगी उससे पहले जो आपने प्रोजेस्टेरोन के 2 पॉइंट्स बताए थे प्लीज जरा रिपीट कर दें वो प्रीटर्म लेबर के बारे में था ना कि प्रीटर्म लेबर में प्रोजेस्टेरोन as of today progesterone is considered to be helpful in preterm labor and there are 3 routes oral diprogesterone is given orally cyclogest is another hormone which is given either per vaginum or per rectum. And the third was the injectable 17-alpha hydroxyprogesterone caproate that started off about 15 years ago, but recently it has been withdrawn in America, and FDA has withdrawn its approval. That approval has been withdrawn and it has been withdrawn from the market. So it is not considered now to be something which helps. We practiced it for so long and we did that on a weekly basis. So now, and the most effective of these is considered to be vaginal progesterone for its local effect and the maximum effect on the genital tract. So considering that, number one, and number two, to compensate for any supposed deficiency of progesterone in early pregnancy, like luteal phase deficiency or dysfunction, it is sensible to give progesterone support. And thirdly, of course, the progesterone does not have any teratogenic or negative effects. So therefore, that would make a good case for giving progesterone. It also, when you said about cramping pain, it also relaxes the uterine muscle. That's another factor of progesterone, progestational effect. And therefore, it helps in also would help in that cramping discomfort in the lower abdomen. So these are the 3 factors or reasons for prescribing progesterone. Chaliye ji. And then comes the inevitable abortion. It is when the changes have progressed to a level that there is that they become irreversible and the continuation of pregnancy is impossible. उसमें क्या होगा उसमें खास तौर पे Sir, कौन सी inevitable में कौन सी cervical os open होगा और products of conception जो हैं वो होंगे. उसमें ये important है उसको बताना कि cervical os जो है वो that will be open and uterus will be contracting. So that discomfort of ये उसको बताने के लिए अब you know when I continue saying discomfort, pain, etc. You would have patients who has threatened abortion but who complains of pain because the pain threshold varies from person to person. But what I am trying to emphasize is that if you say pain, then that pain, the qualification of that is that is the kind of uterine contraction which has now caused opening of the cervical canal is now pushing the products of conception out. So that's the kind of differentiation one has to make threatened abortion from inevitable abortion or vice versa. So in
inevitable abortion, the size of the uterus will correspond. It is that kind of approach is since before the advent and introduction of ultrasound and obstetrics. Now everyone has an ultrasound, and you can always put your transducer on the abdomen and know what's the status of the pregnancy. But previously, when it was not there, or when still you were only banking on your clinical acumen, what you do is that when you examine the patient, you find that the size of the uterus corresponds with the weeks of gestation. It is not as yet smaller than that. Let's say 12 week size, so it is still palpable in a comparatively thin individual. It's palpable just above the pubic symphysis. So size of the uterus corresponds with that. But when you the patient has presented with pains, and when you examine, you do pelvic examination, there is bleeding, and in those cases, then you do a pelvic examination. You do a single digit, and it should always be gentle. I wouldn't want to say that you do a gentle pelvic examination. It should never be rough examination. Whenever you do, it should be gentle physical examination. Sure. So I wouldn't use the term that you perform a gentle physical examination. I will say that you do a pelvic examination and assess digitally the status of the cervix, whether it is dilated or not, or its length, etc., and its consistency. So that's it. तो उसमें वो आप देखोगे कि साइज उतना ही है, लेकिन ब्लीडिंग है थोड़ी सी ज्यादा. पेशेंट के सिम्टम्स में पहले वो बताएं जी कि उसको पहले के लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट था, लेकिन अब पेन होना शुरू हो गया. Also, when we are talking of this, then either we are talking about something of this happening in the first trimester or in the second trimester. But most of these abortions, you know, they take place in the first trimester. There are comparatively far few abortions which take place in the second trimester. And the character of those abortions or miscarriages is different. I would want to talk about a little bit on the topic of this term abortion and miscarriage that we'll come to later on. But in cases of the early abortions, in those cases, usually when you see the patient, either it is a threatened or almost incomplete abortion. But when you look at, Aiye, madam, thank you very much. So good to see you. Very nice color. बड़ा अच्छा किया आपने रिसीव लाइन. अच्छा, तो वो इस तरह से, और यूजुअली इनएविटेबल्स जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इस तरह से हो सकता है. वो बात करने जाओ तो ऐसे थ्रेटन अबॉर्शन के ऊपर 1 घंटा लगा दिया. चलो आगे चलो. Sir, the management includes pain relief in such patients, and if the pregnancy is less than मैनेजमेंट में एक चीज हमेशा शुरू में किया करो, वो है पेशेंट के साथ कन्वर्सेशन तुमने करती है. पेशेंट को कुछ ना कुछ बताना है कि ये आपकी डायग्नोसिस है और ये इसमें ये है. बस show some, मतलब we are not really looking at a piece of paper, we are looking at a patient. How do we manage patient? Or that should be reflected when you project something over there. That what do you tell the patient? So you explain the situation to the patient. Explain. Right? So whatever it is. मैं यही कहने लगी थी कि मैनेजमेंट के 3 हिस्से होते हैं: टॉक टू द पेशेंट, प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड डिस्कस द फ्यूचर प्लान. इन 3 हिस्सों के बगैर तुम जो मर्जी मैनेजमेंट बता दो. मेरे ख्याल में अगर 10 नंबर हो मैनेजमेंट के और तुमने ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम्हें इससे 3 नंबर दूं. सिंपल सी बात है, तुम लोग किसी तरह से बात समझ में आती है. इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू द पेशेंट, यू आर नॉट डूइंग 30% ऑफ द वर्क. यू आर नॉट डूइंग 30% ऑफ द वर्क. अगर तुमने इलाज बताने के बाद उसको उसके डेंजर्स आए, when to come back and how to come back नहीं होता है. So management is not only this. And then in management, there's always back of your mind, there always should be a general management and a specific management. General management ये हो सकती है कि इस patient का जो है वो hemoglobin low हो गया because of the bleeding that is happening. So general management would include reconstitution of a hemoglobin, whether it is by blood or by injection. मुझे blood पे वैसे इतराज है. I would rather put an injection or whatever. तो जनरल मैनेजमेंट की है. स्पेसिफिक मैनेजमेंट है कि वो जो उसको किस प्रॉब्लम हुई है उसका क्या सॉल्यूशन है. दैट इज योर स्पेसिफिक मैनेजमेंट. सो यू डोंट हैव टू गिव हेडिंग्स टू द एग्जामिनर, बट इन योर माइंड दीस हेडिंग्स शुड बी देयर ऑल द टाइम. सो इफ यू स्टार्ट मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विदाउट काउंसलिंग हर, यू शुड नॉट पास एफसीपीएस. मेरी नजर में एमबीबीएस भी नहीं पास सकता. अच्छा, इसमें ये है एग्जामिनेशन पॉइंट. मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ वो एग्जामिनेशन नहीं. इन्होंने बड़ा अच्छा कहा
because I am not preparing you only for the examination. My objective is not that. My objective is for you to become good doctors. When your endpoint, your goal is to become good doctors, passing You don't examination, automatically pass that. passing examination is something which becomes Follows. spontaneous. वो खुद ब खुद हो जाता है. So your approach has to be that. For a little while, absolutely forget examination. But you be a good doctor. So what would a good doctor do? Counsel the patient, discuss वो- it, the मतलब वो समझे कि reassure. अगर उसके साथ हो तो आप किस किस्म की treatment, what kind of medical approach would you expect from your doctor? कि वो आपको क्या कहेगी? ये पिछले दिनों से पीपीएच की मैनेजमेंट काफी जगहों पे जाके डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हर चीज की जो पॉलिसीज हैं वो हर डिजीज में वही है. तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, वो आपके इस पे भी अप्लाई होता है. जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टफुल केयर है वो ये कहता है कि आप पेशेंट को एक्नॉलेज ही नहीं करें, आप उसे डब्बा समझ रहे हो, उसे बुत समझ रहे हो. तो आपको जब तक आप उसको रिस्पेक्ट कैसे देंगे? बाय टॉकिंग टू हर, बाय एक्नॉलेजिंग हर फीलिंग्स, by telling her that you understand what is happening to her and providing an empathetic approach to her. मेरी क्लिनिक में पर्सनल एक पेशेंट के हस्बैंड ने आके कहा कि ये मुझसे बहुत लड़ती है. तो is that part of the management of the patient? The answer is yes. Because you have to look at their situation, try to ease out their situation, help them understand each other, and then become a part of it. So respectful care के बगैर प्रैक्टिस ही नहीं हो सकती OBG या कोई भी मेडिसिन. चलिए. Yes, sir. We will provide the patient with pain relief. And if the pregnancy is less than 12 अच्छा अब चलो ठीक है, अब चलो मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा क्योंकि हम उसी जगह पे अड़े रहेंगे. अब चलो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पेन रिलीफ इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टफुल केयर. अगर आप उसकी इज्जत करते हो, उसका ख्याल करते हो, तो आप उसको पेन रिलीफ दोगे. वरना कहोगे पुराने जमाने में जैसे होता था, दर्द ही तो हो रही है, सारे बर्दाश्त करते हैं, तुम भी करो. तो ये एटीट्यूड नीड्स टू चेंज. दैट्स व्हाई पेन रिलीफ इज इंपॉर्टेंट. अभी तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, तुम्हारी लिस्ट में पेन रिलीफ ना होता. मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, डीएमसी होता. If the pregnancy is less than 12 weeks, suction evacuation is done. If the pregnancy is more than 12 weeks, then expulsion by oxytocin infusion, followed by suction evacuation should be done. Blood transfusion in case of excessive blood loss, and anemia correction can also be done by the injectable iron if in that case the hemoglobin is more than 8. If bleeding is continuous and heavy, injection oxytocin 5 to 10 units should be given immediately. Injection anti-D should also be considered in Rh negative individuals. Should not be considered. It should be given. Given. Okay, then in incomplete abortion, the process of abortion has already taken place, but the entire products of conception are not expelled, and a part of it is left inside the uterine cavity. The patient will be presenting with vaginal bleeding and cramping pain. The cervical os will be dilated, and some products of conception will be felt inside. The patient will present with the history of expulsion of a fleshy mass per vaginum. The lower abdominal pain will continue. There will be persistent. फ्लैशी का है ये. ठीक है, फ्लैशी मैस. लग रहा है फ्लैशी. ठीक है. Persistent previous bleeding will be persistent. On examination, the uterus will be smaller than the period of amenorrhea, gestational age, and the os will be open. ये दोनों तरह से हो सकता है, और ऑस ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकता है. समटाइम्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने काफी देर से आते हैं, लंबी हिस्ट्री ओकेजनली. आजकल नहीं है, आजकल तो बिकॉज अल्ट्रासाउंड से आप फौरन पता चल जाता है कि अंदर है कुछ के नहीं है. लेकिन ये होगा, ये साथ में ये अल्ट्रासाउंड का भी बता देना चाहिए कि उस पे क्या फाइंडिंग्स हो. मुझे लगता है फाइन मेडिकल मैनेजमेंट कर क्या कहाँ पे लिखा हुआ है? Medical management tablet misoprostol microgram is used vaginally every 4 hours. इससे तो एक्सपेल्शन नहीं होने लगी तुम्हारे व्यूज. फीगो प्रोटोकॉल यूज किया करो. फीगो का वो कार्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट अबॉर्शन पे कितनी देते हैं. मैं ख्याल में 3 टैबलेट्स सब. और ये D and C होता है, D and C ना लिखा पता है? So वो n के बाद एक वो कॉमा या का. तो वो करो ना फिर. Yes sir, वो मिस हो गया. नहीं तो and लिखा करो, वो जो ऐसे And yes. सिग्नल दो.
इसको देख लेना, मुझे ज़बानी याद नहीं है क्योंकि मैं तो हर दफा निकाल के देखती हूँ, बट तुम लोग को ज़बानी याद होगा। और जो डीएनसी लिखे, आजकल डीएनसी वैसे कोई इंकरेज नहीं करता, आजकल के लिए तो एमबीए इज द बेस्ट थिंग टू डू, तो एमबीए के बारे में क्वेश्चंस का जवाब देना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट एडवांटेज डज हैव एमबीए ऑन डीएनसी, व्हाट इज द एडवांटेज? ट्रॉमा अवॉइड होता है, किस चीज को? यूट्रस और Due to the specific कंप्लीट region, and इवैक्यूएशन हो जाती है, इजीली कंप्लीट इवैक्यूएशन हो जाती है, और और trauma जो होता है ना वो कि आप you do not over curate the uterine lining. yes. And जिससे वो एपिथेलियल आपको लाइनिंग सेव होती है, सर्विक्स सेव होती है, you don't need anesthesia actually for MBA, we do it all the time in anesthesia, but you can do it in a local block. And if the os is open, then you need not give her anesthesia, just sedate her and suck out the contents. And it is easy, it is cost effective, the MBA syringe is reusable. And DNC is a traumatic procedure, MBA is unsafe, ज़्यादा complete है और suction create है. And it can be done even in the rural setting because बिजली आ रही है, नहीं आ रही है, suction pressure बन रहा है, नहीं बन रहा. If you have an MBA, so MBA is so very called convenient. an office procedure. It's a, you can convert an incomplete abortion. Yes, ma'am, I read about it, it can be done in OPD basis, done in on OPD basis, but we never do it We here for haven't men. done it, but that If does they not mean it mention it. can't be done. हमारी social setting fund है. Okay. But if you were in UK and there was a abortion clinic, patients में line लगा के लेटी होती है तो मैं भी ये कर रहे हैं. नेपाल में मैंने होते हुए देखा था चलो. Then we come to complete abortion. It is when the products of conception are completely expelled from the uterus. Now the cervical os will be closed and the products of conception, they have been expelled. So my question is, if your uterus is the procedure is complete, patient को abortion हो गया, discharge की instruction क्या दो? Discharge पे, के PV bleeding का, they should be, you know, keeping track of the PV bleeding के बहुत ज़्यादा heavy ना हो, और for next अभी pregnant अभी foreign pregnancy ना conceive ना करें, थोड़ा सा मुझे नहीं पता. conception. You haven't thought about it. तुमने किताबी presentation बना ली है. Think about patient as a human being. Would she be upset? Most of the time she would be upset because she is miscarried and she wanted this pregnancy. So what will your count? ये इसके लिए in my practice I do three things when a patient presents with miscarriage, abortion. I would say that I am going to talk to you about three questions that you may have without your asking. One is, why did it happen? What are its chances of happening again? And how soon can I become pregnant? ये तो मिनिमम सवाल है ना कि ये उनके पूछे बगैर आप बताओगे, और उसके अलावा कि जी इसके अलावा बाद में आप बात करोगे कि और क्या. So जब आपके पास patient, when the patient comes to you and she has for example missed abortion या इस तरह की कुछ चीज है, she is very upset. Yes. और उसके लिए वो ऐसा ही है जैसा IUD हो गया. और although हम समझ रहे कि 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी वो बाद में miscarriage और DNC का तो फारे, but so far as the patient and her husband and the family they are concerned, उनके लिए वो इतना ही है जैसे कि full term pregnancy में issues हो गए. So उस तरीके की जो है उसमें वो वाली बात भी एक एटीट्यूड की, ये सबके लिए अप्लाई होता है, बाकी चीजों के लिए थ्रेटन इनएविटेबल वगैरह वगैरह कि वहां पे आपने उस तरह से बात करनी है. सो वो वाला चीज जो है आपने, ये वाली चीज जो है वो तो स्पेसिफिक उस तरह से हो गई. तो जनरली शुरू में ही, क्योंकि ये 3, 4, 5 चीजें हैं और मुख्तलिफ किस्म की इमोशंस है जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हमारा एटीट्यूड डॉक्टर्स का वो उस तरह से होना चाहिए कि वी आर फुली अटेंटिव and the patient must realize she must be given that impression that we are all ears, we are listening to her, we understand that something a tragic event has happened with her. Empathetic. Absolutely. वो empathy जो है सिर्फ हम सिर्फ EMPATHY तक मैं ना रखें उसको शो. It has to be reflective in our personality. एक छोटी सी बात कर दूं जो आपके केस से रिलेटेड नहीं, मुझे याद आती अप्रोच ऑफ काउंसलिंग पे. परसों मेरे एक पेशेंट आके क्लिनिक में रोना शुरू. She said आप डॉक्टर के बदतमीज. और उसके साथ ये हुआ था, कहने लगी क्या 40 पे प्रेग्नेंट होना गुनाह है? मुझे उस तरह से ये था. उसने कहा मेरी एक फ्रेंच फ्रेंड है और एक पता नहीं और काम की टाइप अफ्रीकन टाइप, एंड वो 42 की है, उसके भी डिलीवरी हुई है, उसको तो कोई
stigmatized नहीं कर रहा because she's pregnant. So my patient is 42 and pregnant and coming to you guys in the labor room. वो लेबर रूम में आई है मुझसे मिलने के लिए, तो किसी ने, एक डॉक्टर ने दूसरे को आवाज लगाई, मैं आलिया उसका नाम दे रही हूँ, उसका नाम कुछ और था, मिसेस आलिया 42 आ गई है। कहने लगी my husband was with me when we went home, he said people have got issues, you don't realize, she said कि उसने मुझे कहा कि तुम 42 क्यों हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। Husband is equal age, looks like a young smart man, and the woman is insecure, and the doctors in the labor room are saying आलिया 42 आ गई है। कहने लगी मेरा गुनाह है कि मैं 42 पे प्रेग्नेंट हो गई डॉक्टर रीना। तो कल उसे मिथोट्रेक्सेट लगना था, तो मैंने उसे कहा तुम नायला के पास आओगी, नायला तुम्हें अकेले में जाके लगाएगी, यानी वो आप लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। आई विल प्रिपेयर फॉर यू टू थिंक कि तुम 2 महीनों से कैसे बात। वो कहती है आलिया 42, कहने लगी मेरा गुनाह है 42 पे प्रेग्नेंट हो गई। कि मैंने बहुत बड़ी बात की, मैंने कहा नहीं यार मैं पर हमारे एटीट्यूड जो है तुम लोगों को वो नहीं कर रही, डांट की नहीं, मैं इसलिए इन चीजों के साथ ही करी हूँ, उन्हें अपने एटीट्यूड बदल, जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेंगे जितने मर्जी लाइफ हो जाओ कोई, क्योंकि आप 42 वाले बुरा मानते हैं कि आप कहते हो तुम 40 पे प्रेग्नेंट, कहते हैं सोचना तो बनता है पर मतलब वैसे कब से भी कंपनी हमारी 40 प्लस पे ट्राइंग टू कंसीव से 37 की तो मैं हो गई, 37 की तो मैं हो गई होगी। वो क्या वो आप उस बात नहीं कर रहे थे। लो मेरा ख्याल है टाइम खत्म होने वाला, कितनी स्लाइड्स हमारी रहती बहुत सारी रहती है अभी। हाँ ये असल में अब आप बैठ जाओ तो मैं थोड़ी सी बातें और करना चाहूंगा इसमें। उसमें एक दो चीजें हैं वो अबाउट टर्मिनोलॉजी है, अबाउट अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। ये मैंने उस दिन कहा अबॉर्शन, तो वो हमारी एक एसआर है ये, बिकॉज देयर आर अदर पीपल आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, and the conversation was going on WhatsApp, and she pointedly said it is not abortion, it is miscarriage. Abortion is now an obsolete, and to a great extent she was right. Now you see, previously this used to be called abortion and everyone referred to it as abortion, but over the last 30 to 40 years there is different perception. And so, technically speaking, if you say threatened abortion, that is right. And if you say inevitable, repeated miscarriage, etc. So, these terms are interchangeable and they are both correct. Abortion is also correct, miscarriage is also correct. So far as general public is concerned, in their mind or in lay people and lay people's mind or lay press, abortion is something which is carried out, induced. It is an induced procedure, whereas miscarriages which happens spontaneously. So there is a connotation that if you refer to someone is having abortion, that means someone is having is doing something which is open to objection. It will be acceptable to half of the people and it may not be acceptable to half of the people. Whereas ये मैं थोड़ा सा यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन से हट के मैं जरा अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा करने लगा हूँ। 2-3 चीजें मैं करूँगा। ये मेरा जरा स्क्रीन शेयरिंग करवाओ ना मेरी आप, हो सकती है? जी हो सकती है। पहले मैं देख लूँ कि मैंने करनी कहाँ से। वैसे ये एक आज सुबह सुबह मैंने देखा है, मैंने कहा उन लोगों को भी दिखा दूं, है तो चीज इसके साथ रिलेटेड नहीं है। ये करें जरा स्क्रीन शेयर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर प्लीज जरा सेप्टिक मिसकैरेज या सेप्टिक अबॉर्शन के ऊपर रोशनी डाल दें। इसके ऊपर अगली दफा चलेंगे, जरूर चलेंगे। आज टाइम अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन चलो ये भी नहीं, मैं भी आपको दिखा रहा, मैं आ रहा हूँ इस पे। ये जो मैंने थोड़ी सी स्लाइड हो गया, कर रहे हो आप? उनको आइंदा से कहोगे जब मैं करूँ तो ये ऑटोमेटिकली कर दिया करे, पहले दोबारा क्या नाम? जी सर।
हो गया? जी ऑलराइट, ये था। इसमें मैं जो चीज आपको दिखाना चाह रहा था उसमें ये बड़ी चीज है। आपने वो 28 वीक्स वाला किया। एक तो ये अबाउट द टर्म कि हम इसको अबॉर्शन बोलेंगे या मिसकैरेज बोलेंगे, दोनों करेक्ट हैं। बट एज आई सेड that miscarriage is generally considered to be in the lay press something which is happening spontaneously and over which one doesn't has control, and abortion is something which is induced. Sir Stanley Clayton and John Newton, these actually were the authors in 60s and 70s of 10 teachers books, obstetrics and gynecology. It still is going on. The authors keep changing, but they are very senior gynecologists in UK, and they were authors of the books. And expulsion of the conceptus prior to 28th week of pregnancy, जैसे आयशा ने पहले बताया हुआ, और अभी तक वहां पे लीगली यही डेफिनेशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब डेफिनेशन आपने जब इम्तिहान में अगर देना है तो डेफिनेशन आपके लिए ये होनी चाहिए, एंड यू शुड गिव दैट रेफरेंस दैट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन, दोनों चीजें। एक्सपल्शन होगी स्पॉन्टेनियसली और एक्सट्रैक्शन होगी जब आप एमबीए करते हो या पीएनसी करते हो। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ अ फीटस और एम्ब्रियो। So what is fetus and embryo? वो ये दोनों चीजों का up to 500 grams. Embryo is up to 8 weeks. उसको उस तक आप एम्ब्रियो बोलते हो, तभी उसको एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी होती है, जिसमें वो क्या होती है उसका भी पता होना चाहिए आपको। ये अगली दफा के लिए सवाल है। So और of fetus और embryo weighing less than 500 grams. और ये 20 वीक्स पे आमतौर पे होता है। 20 पहले कहा जाता था कि 20 वीक्स पे एवरेज वेट 400 ग्राम्स है, बट अब ये आ गया 20 वीक्स पे। एंड यू वेरी राइटली, आयशा ने बड़ा अच्छे तरीके से उस वक्त बताया था कि वायबिलिटी की एज जो है वो कम होती गई। पहले 28 से 24 वीक्स आ गई, और उसमें कितना वेट था, 600 ग्राम्स है। अमेरिका में कुछ स्टेट्स ने ये जो वेट है ये 300 ग्राम्स करती है। बट फॉरगेट दैट, just remember World Health Organization's definition, and that will be safe thing. And similarly, most of the medical community also agrees with that abortion is the process of delivering a conceptus prior to the fetus's viability, that it cannot be made to survive. Although 22 या 24 weeks के बच्चे अब survive कर दिए गए हैं जापान में, 24 weeks से भी थोड़ा सा कम, which is defined as 20 weeks of pregnancy or a fetus weighing 500 grams or less. So ये वाली है, और वो नीचे वाली डेफिनेशन जो है वो अब फिर वो इनफ्रुक्टोस हो गई है, वो खत्म हो गई। So you should be clear about the words abortion and miscarriage. Professionally, for gynecologists, they are interchangeable. But when you talk outside, then these days, abortion is generally considered to be something which is unsafe abortion. So उसके लिए I'll talk to you about unsafe abortion and the impact that it has on maternal mortality as such. Those are vital statistics which the definitions you should be aware of. What is maternal mortality? What is fertility rate? What is neonatal mortality? इनकी definitions जो है वो जरा आप अच्छी तरह से जरा देखो, याद करो और ढूंढ के लाओ। अगली दफा हम उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं तेरे नाल ऐड कर दूंगा, इनको अगर इनको करेक्ट डेफिनेशन नहीं आती तो उस स्टेशन पे ये पास नहीं होंगे। हाँ जी, ये और सब के अगर डेफिनेशन करेक्ट नहीं आए, करेक्ट डेफिनेशन पहली चीज है कि आपको पता तो होना कि क्या जी, तो वो पास तो इसलिए। एंड व्हेन यू डिफाइन तो फिर आप कोई उसका रेफरेंस भी देंगे कि किस वजह से आप कौन कह रहा हो कि इस तरह से। ठीक है जी सर, और ये सर बिल्कुल ठीक ठाक है।